अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिजिस्किल के प्लेटफॉर्म से कम्युनिकेशन एंड सॉफ्ट स्किल की जो क्विज नंबर 4 है, बैच नंबर 5 की, इसको सॉल्व करेंगे। ये आपके सामने क्विज फाइल मैंने रेडी की हुई है टाइम को सेव करने के लिए, जिसकी ड्यू डेट है 10 सितंबर 2023। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे पास जो भी अवेलेबल फाइल के लिंक होंगे वो मैं शेयर कर दूँगा। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। तो लेट्स स्टार्ट। जी क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हेन रिसीविंग इंस्ट्रक्शन व्हाट इज दैट यू कैन डू टू मेक श्योर यू रिमेंबर देम? ए, सर्च ऑन गूगल, डे ड्रीम, ग्रुप डिस्कशन, टेक नोट्स, आस्क क्वेश्चन एंड समराइज देम एट द एंड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है डी है। Question number 2 है, to make your vocabulary strong, which of the following is important? A है making notes of English stories, B है जी consulting dictionary for new words। तो ये दोनों आ सकते हैं, लेकिन हमारे पास एक ही ऑप्शन है तो उस एक को क्लिक कर देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, his effort was not to succeed, A to be enough। तो इसमें भी आएगा। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन? क्लियर, कंसाइज, क्लेवर, कंसाइज। तो इसका सी आएगा, क्लेवर। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लैंग्वेज स्किल? राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग। तो ए आएगा, ये राइटिंग। Question number 6 है, a paragraph must have main idea of overall theme, detail of the single idea, connecting point to next paragraph, all of the given option are correct। तो इसका D correct answer है। Question number 7 है जी, if you effectively work, you dash A are getting good grades, B will get good grades, C is getting good grades, और D है none of these। तो इसमें B आएगा, will get good grades। Question number 8 है जी, professor told the students to submit their final project next week, A direct speech, B indirect speech। तो इसका correct answer A है। Question number 9 है, it's dash late to stop the machine now। तो ए है 2 और बी है एनफ। तो ए आएगा इसमें 2। क्वेश्चन नंबर 10 है जी, लास्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इम्पोर्टेंट इन वोकैबुलरी बिल्डिंग? बॉडी लैंग्वेज, पोस्चर, करेक्ट लर्निंग एंड यूजेज ऑफ वर्ड, वॉइस स्पीच। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी है, करेक्ट लर्निंग एंड यूजेज ऑफ वर्ड्स। तो ये थी छोटी सी क्विज की जो फाइल जो मैंने रेडी की है, जो मेरी काविश थी। तो उम्मीद है कि आपके लिए ये हेल्पफुल साबित रही। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।